This conference will now be recorded. So this is our, okay. And we must need to use, I think, server operating system in case of on-premises, right? It's Yeah. mandatory to use server operating system to synchronize the space. I think you already had the 2012 server on your system. There was a problem? Yes, we have already installed, but unfortunately, in case of our file synchronization, it create means uh, kind of logs in our server operating system, so we are unable to log in it. तो एक बार fresh से देख लेते हैं. Okay. रजिस्ट्री में जाके ना इसको सारी चीजें क्लीन करनी पड़ेगी, देन यू आर एबल टू इंस्टॉल इट अगेन एंड अगेन. क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन केस ऑफ एज्योर फाइल सिंक सर्विसेज, कि अगर आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया ना, तो जब तक आप उसको रजिस्ट्री से नहीं रिमूव करोगे, यू आर अनेबल टू गेट अ लॉगिन स्पेस. All right. वो लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं देगा. बार बार इंस्टॉल करते रहेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा, बट जब आप सिंक्रोनाइज वाला पेज ओपन करेंगे जहां से हम ऑथराइज करते हैं ना, वो आपको ऑथराइजेशन का पेज ही नहीं आएगा. Actually, what happened? I have already completed the same task on both machines. ठीक है ना? vCenter server और domain के ऊपर हमने पहले से यूज कर रखा था. That's why we are unable to open it. So it will take hardly 5 to 7 minutes to install our new server. क्योंकि मैंने इसको SSD में डाल रखा है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. And meanwhile, let's talk about the other points. So in case of other points, this is our storage, right? Training storage 1988. And what we need to do, we need to create a file share. This is the container for our Azure site. तो यहाँ पे हम Azure storage के नाम से दे देते हैं. This is our container for Azure services, right? Azure storage, create, and as we know that by default ये 5 TB का space देता है, but I don't want to use 4 TB, right? 10 GB के आसपास space हम देना चाहते हैं. So basically we want to store up to 10 GB of data जो आपका on premises से synchronize होगा. Correct? This is our Azure portal, और Azure portal में एक सर्विस और परचेज करनी पड़ेगी, which is Azure File Sync, right? ये तो फाइल शेयर हो गया. अब आपको फाइल सिंक परचेज करना पड़ेगा, and with the help of file sync we are able to make a communication, right? So we just need to type Azure File Sync. यहाँ पे मार्केट प्लेस में आपको मिल जाएगा फाइल सिंक का ऑप्शन. You must need to use a unique name. तो यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, class file sync. ठीक है? Yeah. Central US is our location, so I'm going to create in Central US. All the network, because we want to access it from anywhere.
Okay, so storage account is ready, our file sync is ready. We just need to synchronize with on-premises, right? Synchronize group में जा करके we just need to add our storage that we have already created. So कोई सा भी नाम दे देते हैं यहाँ पे, group का नाम दे देते हैं hybrid storage, ठीक है? Okay. Select your subscription, select your resource group, and storage account that you created. So we created a storage account. ट्रेनिंग स्टोरेज 1988-5 ये आपका सेंट्रल यूएस लोकेशन में है. फाइल शेयर में भी जस्ट हमने क्रिएट किया है फाइल शेयर विद नेम ऑफ एजर स्टोरेज एंड क्रिएट. नाउ सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर फाइल सिंक टू फाइल शेयर, है ना? फाइल शेयर और फाइल सिंक के बीच में मींस क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन हमने स्टैब्लिश कर दिया है. वी जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विद ऑन प्रीमाइसेस. अभी हमें क्या करना है, ऑन प्रीमाइसेस से इसको कनेक्ट करना है. Okay. Okay, our on-premises server is also installed successfully. So what we need to do, we must need to install the VMware tools, which is mandatory. Otherwise, your network established nahi karne dega. Network in the sense we are unable to access the internet connection. So it's a default and built-in tool. 2 minutes lagega. We just need to install and restart it. And normally VM tools is, I think that's not required. Yeah, it's mandatory to install in both cases. Means like in case of VMware workstation और या आप ESXi भी यूज कर रहे हैं तो उस केस में VMware tool का इंस्टॉल करना mandatory है. Okay. Because it contains the information about all the drivers. सिस्टम के अंदर जो भी ड्राइवर्स वगैरह लगे हैं ना उनको ये इंस्टॉल करने का काम करता है.
Okay, done. So our server is ready to use. What we need to do, we just need to create a one file share, और उस file share को हमें distribute कर देना है with the entire system. And no need to create the user right now. Not required. In case of Active Directory, we just need to create a user. AD का जब setup लगाएंगे तो हमें user create करने की requirement रहेगी to share with our client machine. Okay. I'm going to type the name of local share and share with full permission. Done. Back to the Azure portal. You can just download a tool. You know that tool name is Azure File Sync service. Yeah. Just need to install like as a normal application.
ओके, सो ये विजर्ड हमारे लास्ट वाले प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा था, राइट? आई गॉट दिस वन, यहाँ तक तो मेरा आ गया था. हाँ, एक्चुअली दे चेंज सम पॉलिसीज. Azure ने बैकएंड से कुछ पॉलिसीज चेंज कर रखा है. We just need to I am signing in as a cloud solution provider. You just need to activate and provide the tenant ID. Okay. ठीक है ना? Because due to security reason, what happened कि गलती से किसी को यूजर आईडी या पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मिल गई, राइट? सो एनीवन कैन लॉग इन एंड डायरेक्टली एक्सेस योर स्टोरेज अगर आपने कोई स्टोरेज सिंक बना रखा है तो. Okay. So what you need to do means user ID password तो आपको देना ही पड़ेगा, but साथ ही साथ you must need to provide the tenant information. If you have a multiple tenant in single account, so you need to provide the actual tenant जहाँ से आपने storage बना रखा है. तो I'm just going to copy the tenant information. Easy to copy from Active Directory services. Just need to open Azure AD. और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे टेनेंट आईडी इंफॉर्मेशन है. जस्ट कॉपी द टेनेंट आईडी एंड पेस्ट हियर. Okay. देन साइन इन. अब जितने भी यूजर होंगे, स्पेशली ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट की बात करें या फिर आपका नॉर्मल जो यूजर है जिसकी हेल्प से आप लॉग इन करते हैं, वी आर एबल टू just assign. But before that, you need to provide your local administrator account. Then provide the Azure account. Done. We successfully provided the entire information which is required to make a connection between each other. यहाँ पे हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है जिसके थ्रू हम अप्रूव कर सके कि दिस इज माय ऑन अकाउंट, राइट? So what you need to do, you must need to select the subscription detail. So our subscription, I have a two different subscriptions. So 4.6 वाला जो है जहाँ पे हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है, so that's why just select the same subscription. Resource group is AVD class. And storage sync हमने एक बना रखा था. We just created a file sync with name of class file sync, I think. अभी थोड़ी देर पहले हमने create किया था. So select your class file sync and click register. Let me verify because class file sync के नाम से बने हैं. Class file sync with right? And click register. So this is the procedure to make a connection between each other. अभी हमने इसको successfully synchronize किया है. Now, another important part, we must need to provide the location of your file share. Everything is okay, no need to do anything. We successfully registered our server. And now back to the Azure portal and refresh the page. Register server पे verify करेंगे. Yes, we have a one server, win something online, status is online, means we successfully connected our server to our Azure portal. And what we need to do, another important part is click on synchronize group and open your synchronized group that you created. This is cloud endpoint that we created and add server endpoint. Azure portal पे जो storage create किया था, we successfully connected. But अभी हमें क्या करना है, जो server on premises पे establish किया है उससे भी हमें join कराना है.
तो क्लिक कर देंगे यहाँ पे सर्वर एंड पॉइंट पे, सेलेक्ट योर सर्वर दैट यू रजिस्टर्ड, एंड ये जो पाथ की बात कर रहा है ना, सो पाथ के केस में क्या आएगा, जो आपने फाइल शेयर क्रिएट कर रखा है ऑन प्रोमाइसेस पे, जो फोल्डर शेयर कर रखा है उसका पाथ प्रोवाइड कर दीजिए. So this is the path e/e:/local share. Done. No need to do anything. Click create. Done. We successfully proceeded and connected. Health pending है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा. And then we are able to synchronize the data. Okay. So back to the Azure File Sync. यहाँ पे आ जाते हैं फाइल शेयर पे. Sorry. This is our Azure storage. अभी यहाँ पे कोई भी डेटा या कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू, बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस, जो सर्वर पे आपने फाइल शेयर बना रखा था, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन फाइल या फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे डेटा के नाम से. इसके अंदर कोई भी एक टेस्ट फाइल क्रिएट करते हैं. We are able to find the same data over a Azure portal. And now another important part, इसके बाद हमें क्या करना है, we just need to share the space. We have already shared the space जो सर्वर में क्रिएट किया था. सेम स्पेस को हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, मींस जो बाकी की मशीनें हैं. 1.6. So let me verify the communication first. यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं /192.168.1.6. username and password.
ठीक है, so this is the file share that we shared. जो folder हमने share किया था, right click and we just need to click map right. अब जितने भी सिस्टम हैं ऑन प्रोमाइसेस के केस में, जितनी भी मशीनें ऑन प्रोमाइसेस में अवेलेबल हैं, we just need to assign the same file share. और जो भी क्लाइंट, जैसे अभी हम विंडोज 10 पे हैं, अगर आप यहाँ पे कोई डेटा रखते हैं, कोई भी फाइल या फोल्डर अपलोड करते हैं, like I'm just going to create one more file, one more folder 10 के नाम, ये सेम विंडोज 10 का फोल्डर आपको Azure पोर्टल पे दिखने लगेगा. करेक्ट. तो जितने भी ऑन प्रोमाइसेस पे सेटअप है, वो सभी वो जो भी डेटा अपलोड करेंगे, दे आर एबल टू एक्सेस फ्रॉम क्लाउड. Yeah. This is the actual concept. Okay. Now got it. Okay, so just go through the topics that we completed in our storage services. And the rest two, I mean, Q and that's left. Sorry? The file is completed or something else we need to do? No, it's completed. Okay. Then blob is completed, file is completed. And what are the uses of queues? Where do we use that one? Okay, actually the queues and table both are related to the development part. So which is responsible to contain the structured data. Means if we have a kind of a SQL NoSQL database, so we are able to use to store our database file in our queues and file share. Okay, just like in Cosmos DB. Cosmos DB, Aurora DB, Dynamo DB, कोई सा भी. Okay. So normally we use in the development side. It is basically for database and developer. Okay. Right. And where I'm reading something, it's that's used for the, I mean, somewhere is function and serverless functions we using in that queue, and is it something there? No, serverless is a totally separate part. Okay. With the help of serverless, we are able to manage our storage, database, virtual machine, anything. Serverless is a method, you can say that can help us to manage our Azure services. कोई से भी services हो सकते हैं, जैसे Azure function हो गया, Azure apps हो गए. So these all are the example of serverless. Means you just need to set a kind of a schedule, and according to the schedule, you are able to get your services. Okay. So what the next topic now? We'll move on. That's VM and networking. VM then networking. Okay. Fine. So the file is completed, and just I need to brush up everything. Right. Okay, fine. So next topic is related to the virtual machine, and then networking, then our backup and restore services. This monitoring का part आएगा. So if the one thing is that's in mind, if we have some time, then can we go for Intune lab?
Intune में कोई exact practical आप जो करना चाहते हैं? That's I need to make a statement for that. I mean, या तो मैं एक नेट से उठा लेता हूँ स्टेटमेंट, उस पर विल वर्क ऑन दैट. नहीं, related to the enrollment या फिर you want to apply any group policy या कोई application install करना चाहते हैं with the help of Intune? That's I mean मेरा basically applications के लिए था, means to control the device and install the application. I mean control the device basically. You can delete and install the applications. But to control any application, you first of all we must need to enroll the device, no? Yeah, enroll the devices. Then we need to make the group policies or not? We are able to do that. Okay. We can configure the group policy. Okay, fine. What was doing? I mean, trying for the. I mean, to control the device, enroll the device, control the device. I mean, to install something on the client side. Yes, we can install the applications to client machine, enroll device client machine. Means abhi recently they are planning to establish SCCM services on our Intune portal as well. So day by day Microsoft कहीं ना कहीं नई चीजों को involve कर रहा है. Okay, ठीक है. fine. बट अभी करंट टाइम की बात करें तो अगर अपने पास एप्लीकेशन करंट सर्विसेज की बात करें, सो वी हैव अ मींस ग्रुप पॉलिसी जीपीओ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. दूसरा वी आर एबल टू मैनेज द application services और n number of options. You can create your own policies. आप अपनी पॉलिसी खुद भी तैयार कर सकते हैं. Okay, fine. So it will take time, or I mean, we need separate. Sorry. It will take time. Means first of all we need to enroll the device. We need to know about the method and procedure to enroll the devices. So half of the thing I'll do it. So where we'll stuck, I'll note the point and I'll give you a control, then you will check what I've done and then we'll complete the practical. Is it okay? Fine. You do one thing. You just need to enroll the device. ठीक है. अब अपनी तरफ से कोई भी Windows device, कोई Windows 10 operating system enroll करके, then we'll discuss about the procedure to configure the policy. Okay. Right. That's all I'll do. मैंने किया, इतना तो शायद कर लिया था मैंने, but मैं दोबारा सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ and I'll try to do that thing. क्योंकि वो तो मैंने सारा डिलीट कर दिया था उस पे, रिसोर्स ग्रुप पे डिलीट कर दिया था. Okay, no problem. So subscription के time पे you just need to activate the E3 security license. That's the both of I'll do it. अच्छा. E3 and P2 both. That I'll do it. ठीक है. तो Microsoft का मेरे पास अपना है. I have for my company I have taken for a 6 user. So पर उसके अंदर वही था कि एडमिन जो कंट्रोल था, एडमिन नहीं आ रहा था बस. So that I can use it. So it's over for today. Yes, we start by tomorrow. Like as next we have 15 minutes. So let's talk about the virtual machine ताकि आपके पास कुछ कंटेंट मिल जाए VM में थोड़ा समझने के लिए. Oh, fine. Right. So as per the name suggests, over Azure portal, not only the Azure portal, every cloud provider can give us option to purchase the virtual machine. But Azure can give us an option, a number of options related to the virtual machine. Means as per your requirement, you can proceed with any option. आई थिंक सभी क्लाउड प्रोवाइडर को अगर हम कंपेयर करें तो Azure एक ऐसा पैनल है जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्शन रहते हैं टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन. लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट.
Azure VM. So basically we have a 4 different way to purchase our virtual machine, or you can say that to create our virtual machines. Azure portal के ऊपर 4 अलग-अलग मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपने VMs को create कर सकते हैं. Like as I'm just going to start from the very basic, like as the first one is on demand. Second, you can say that reservation, and third, dedicated, and last one is VMSS. So these all are the method, you can say that जिसकी help से हम virtual machines को create कर सकते हैं. Okay. VSS is what? Virtual machine? Skill set. Okay. Skill set. Okay, fine. Now, on demand, let's talk about the meaning of on demand. Basically, on demand क्या होता है ना? जो सबसे ज़्यादा इंस्टेंस यूज किया जाता है, which is on demand. और ऑन डिमांड में कभी भी Azure हमें कोई भी you can say that कभी भी Azure हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देता. Is it okay? Yeah, okay. Because you are owner of this particular machine and आप डिसाइड करोगे कि आपका अपना इंस्टेंस कितने दिन तक कितने आवर्स तक यूज करना है, and you have a authority to delete any time. Means you have a full rights. और इसकी वजह से Azure कभी भी आपको इस पे डिस्काउंट नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट होता है बिटवीन क्लाइंट, बिटवीन कस्टमर एंड ऑनर, वो इस्टेब्लिश नहीं होने की वजह से इस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता. सेकेंड, सबसे ज्यादा यूज में आता है क्योंकि कोई भी अगर टेस्टिंग करना चाहता है, कोई भी चेक करना चाहता है कि Azure के ऊपर सर्विसेज कैसे चलती हैं या VM का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तो मोस्टली ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन ही परचेज करते हैं एंड फॉर द टेस्टिंग पर्पज. सो दैट्स वाई ये सबसे ज्यादा यूज में आता है. इसका जो पेमेंट है वो है पे एज पर यूज. ठीक है, इसमें जितना आप यूज करेंगे आर्ली बेसिस पे इसका चार्जेस है, जितना आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसका पेमेंट देना पड़ेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिजर्वेशन. सो एज पर द नेम सजेस्ट, रिजर्वेशन के केस में मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम को लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करना चाहते हैं. स्पेशली इफ यू प्लान टू इस्टेब्लिश, अगर आपको इफ यू वांट टू इस्टेब्लिश, यू कैन से दैट वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, या फिर आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर कोई डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो दैट टाइम यू नीड टू प्रोसीड विद रिजर्वेशन. बिकॉज रिजर्वेशन के केस में यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द टर्म्स लाइक एज 1 year and 3 years and 5 years. 5 अलग अलग टर्म्स में अवेलेबल है अपने पास रिजर्वेशन वर्चुअल मशीन. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिजर्वेशन के केस में वी हैव 2 more बेनिफिट्स. लाइक एज पहला कि आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट के लिए. एक अपफ्रंट का ऑप्शन है एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू पे इन EMI. गैप क्या है दोनों के बीच में? अगर आप अपफ्रंट पेमेंट देते हैं तो Azure will provide you 25% to 65% डिस्काउंट. अगर आप EMI में पे करते हैं तब भी हमें 15 से 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा. इज इट क्लियर? तो बिकॉज एज यू नो वेरी वेल अबाउट, अगर आपने 1 साल के लिए भी इंस्टेंस परचेज किया ना, तो डेफिनेटली आप केवल इंस्टेंस ही नहीं परचेज करेंगे, आने वाले टाइम पे और भी सर्विसेज आप परचेज करेंगे. तो इट्स जस्ट मेकिंग अ कस्टमर, जेन्युइन कस्टमर ये क्रिएट करते हैं, राइट? लेकिन मैं कहीं पे आई वाज स्टडीइंग समवेयर, मैंने पढ़ा था कि रिजर्वेशन नॉर्मली क्या होता है कि एज एन स्किल सेट भी यूज कर लेते हैं कि नॉर्मली इफ यू अनलोड ऑन योर सर्वर
then you reserve one or two system if to share the load. एग्जैक्टली सी जो सर्विसेज आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे वेब सर्वर है, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए जाहिर सी बात है इस्तेमाल करेंगे। अगर एक हम बिजनेस भी ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करने के लिए हमारे पास 1 से 1.5 साल का टाइम होना चाहिए, या 6 महीने मिनिमम तो देंगे ही। तो ऑन डिमांड के केस में जहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं किसमें, रिलेटेड टू द रिजर्वेशन, जिसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट की सेविंग करा सकते हैं। Okay. ठीक है। Now, dedicated, which is really important. Dedicated, as per the name suggests, इसमें क्या होता है ना, whenever we proceed to purchase any services, ठीक है, जब भी हम कोई भी सर्विस परचेज करते हैं, स्पेशली जब हम वर्चुअल मशीन की बात करें, तो वीएम में क्या होता है ना, वर्चुअल मशीन के केस में क्या होता है कि जब आप एज्योर वर्चुअल मशीन परचेज करते हैं, तो इस केस में आपकी वीएम मोस्टली शेयर्ड वर्चुअल मशीन होती है। Got it what I'm saying? Shared virtual machine. I mean, For if you need, example, then you can use it. नहीं, shared host they are providing us shared host. ये अपना backend का setup है Azure का. They establish a setup, means it's a type of host in the sense high configuration based machine, ठीक है। और ये सेंट्रल यूएस का सेटअप है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूएस में इन्होंने एक सेटअप बना रखा है, दिस इज होस्ट, हाई कॉन्फ़िगरेशन का होस्ट है। दिस इज योर पोर्टल, मीन्स आपका अकाउंट है, दिस इज माइन अकाउंट। ये पोर्टल 1 एंड दिस वन इज पोर्टल 2। क्लियर? आपने एक इंस्टेंस परचेज किया इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल यूएस, ठीक है, मैंने भी एक इंस्टेंस परचेज किया इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल यूएस। शेयर्ड का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ शेयर्ड इज बेसिकली आपका जो होस्ट है, जो हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है ना, which is share the hardware with multiple account. Got it? Yeah. एक ही होस्ट से हमें भी वीएम मिल रही है, और मींस मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल अकाउंट्स को वर्चुअल मशीन मिल रही है। Okay. जब ये डिस्कशन जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, लाइक बैंक्स की बात करें, या जो और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है उनका, और उनके सामने जब ये चीजें डिस्क्राइब की गई ना, तो इट्स रियली डिफिकल्ट। वो तुरंत मना कर दिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद शेयर्ड सर्विसेज। सो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया डेडिकेटेड, ठीक है, कि अगर आपको लगता है, वैसे तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं रहता किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के लिए, क्लाउड प्रोवाइडर के पास, बट उनकी फॉर द सेफ्टी पर्पस दे डिसाइडेड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू डेडिकेटेड इंस्टेंस। तो डेडिकेटेड क्या करता है कि डेडिकेटेड के केस में, एज पर द नेम सजेस्ट, दे एस्टैब्लिश द होस्ट इन बैक एंड एंड द होस्ट मस्ट बी एसोसिएटेड विद सिंगल अकाउंट। अब ये जो होस्ट बैकएंड में एस्टैब्लिश किया जाएगा हाई कॉन्फ़िगरेशन का, वो एक पर्टिकुलर अकाउंट से एसोसिएटेड। इज इट फाइन? हेलो, Fine. ठीक है, बट इसका जो कॉस्ट है ना, बहुत ही ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ रिजर्वेशन, इन कंपेयर ऑफ अदर स्टोरेज, ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। And last one is VMSs, as per the name suggests, virtual machine scale set. Virtual machine scale set क्या करता है? Virtual machine scale set के केस में it provides us a cluster. The meaning of cluster, आप एक से लेकर के 1000 VM एक बार में क्रिएट कर सकते हैं on single click. Second important part, it gives us a scale in और scale out. दो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा ये, scale in का और scale out का। So if you want to establish the auto scaling kind of auto scaling services, then VMSs can help us. Okay.
ठीक है, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन. हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकल मीन्स टू एस्टैब्लिश द एनवायरनमेंट. क्लियर. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मीन्स ये सभी प्रैक्टिकल देखने हैं, स्पेशली ऑन डिमांड, रिजर्वेशन और आपका डेडिकेटेड वीएमएस. क्लियर. फाइन. तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. आप जो भी प्रैक्टिकल्स हुए ना एक बार अकाउंट एक्टिवेट करके. या मेरे को करने एक्चुअली मैं तो वही था कि आई फॉरगॉट द थिंग व्हेन आई मैं इसलिए एक वो रिक्वेस्ट है कि बस क्लास बीच में अगर थोड़ा सा खैर इफ यू आर नॉट वेल तो कुछ कर नहीं सकते बट ट्राई टू डोंट स्किप द क्लासेस बिकॉज द थिंग इज व्हाट अब मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो छोड़ दी है क्योंकि बेसिकली अगर मैं कहीं एक्स्ट्रा मतलब कहीं पे वीडियो करता हूँ कुछ और सेल्फ स्टडी करता हूँ तो somewhere I'll be confused. So now I'm totally depends on you. What you're teaching me, I'm doing that thing only. उसमें मेरा confusion कम होता है because I'm getting very clarity on the things. Okay. So if you give me time, तो मैं वो दो चीजें कर तो लेता हूँ but so many things in the mind तो बीच में वो skip हो जाती है चीजें. So if I'll do in the regular basis, तो वो चीजें continuity चलती जाती है. फिर वो मैं मतलब grasping थोड़ी easy हो जाती है. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, वी आर ऑन ट्रैक. तो बेसिकली अब जो है प्रॉपरली चलेगा अपना. मतलब मैंने एक्स्ट्रा काम करना बिल्कुल बंद कर रखा है. जितना मैं करता हूँ उतना कंफ्यूज हो जाता हूँ. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, अभी रेगुलर चलाएंगे इसको तो कंफ्यूजन नहीं होगा. बिकॉज इसके बाद जितने it's in a 4 months 4 months से जॉब नहीं की है so just I have focus on this thing only. श्योर. ठीक है. Okay, so we'll send the recording and we'll connect in this session. Yeah, thank you so much. Okay, thank you.